Good morning, students. Welcome back to your online sessions of Science Class 9th. Students, before we discussing our topics, I hope you and your family will be safe in this pandemic situation. So I requested to you, stay home and stay safe. Unnecessary, avoid to go outside your homes. If necessary, then use the mask. Always take a sanitizer with yourself. When you are in homes, within a 3 to 4 hours approximate times, wash your hands within a 20 seconds. To stay home and stay safe. Now let me start to our topics that we are discussing with our previous class is a form of motion. Now first of all, we describe the definition of motion. What is the meaning of distance? What is displacement? What is speed? How we can find the velocity? How we can find the speed? In which velocity? Velocity, uniform speed, average speed. Also we are discussing about the displacement into the previous topics. Today we are discussing about the topic that is based on acceleration. Now word acceleration of accelerate, this type of words have been heard already and similar. Accelerate means what? To increase or maybe decrease the speed. Accelerate means what करना? To increase the speed. Simple terms में हमारे माइंड में वही बात है, accelerate यानी acceleration को बढ़ाना यानी कि to increase the speed. मान लीजिए right now I am driving my vehicle on a speed of 40 kilometers per hour and I need to be increased on 60. Then what I have to do? Press the accelerator or maybe move the accelerator. So when you implement the accelerator, it means what? Speed will be changed. Or maybe you are moving on to the 80 kilometer speed and we see that there is a red light. So when you decrease your speed, means you reduce the accelerate. The speed will be reduced. So in the both situation, that is the meanings of the acceleration. Both the scenarios, that is called as acceleration. So definition of acceleration is what? So rate of change in velocity in a object if in a motion is called as acceleration. So rate of change in what? Rate of change into the velocity in an object. If in an object in a form of motion is called acceleration. If an object in a form of motion and there is a change in its velocity, rate of change in velocity. So if change in object in a form of velocity which having in a form of motion, so that is called as acceleration. उसको acceleration कहेंगे. Simple form में अगर हम कहें तो change in velocity of object who is in a motion, it's called its acceleration. तो अगर velocity object की अगर change होती है उस object का जो motion के form में है तो उस तरह के objects को आप क्या कहेंगे? That is called acceleration. तो change of motion or the rate of change of motion, the object who are on a form of motion, then this type of the changes is known as the acceleration. Acceleration को simply हम small a से denotate करते हैं. Small a for the acceleration. You see that? Small a for the acceleration. So small a is the acceleration is equal to change in velocity upon time. So what अगर आप चेंज करते हैं स्पीड बढ़ाते हैं तो इट विल टेक सम टाइम, या आप स्पीड डिक्रीज करते हैं तो इट विल ऑल्सो टेक सम टाइम्स. मान लीजिए आप 80 के स्पीड में जा रहे हैं, लेट वी सपोज कि आई एम मूविंग ऑन टू द स्पीड ऑफ 80 एंड आई विल डिक्रीज माई स्पीड ऑन 40. सो विद इन अ क्विक सेकंड यू विल कन्वर्ट टू 40? नो, इट विल टेक मिनिमम 0.5 सेकंड और 1 सेकंड दैट रिड्यूस योर स्पीड. सो चेंज इन वेलोसिटी इन अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ मोशन, दैट इज कॉल्ड एज अ acceleration. So acceleration is equal to change in velocity upon time. So velocity change means what? जिसे आपको कल भी बताया था कि change in place, that is called what? Displacement. तो displacement find करना हो तो कैसे पता चलता है? The final displacement minus, it means final position minus initial position, then you will get the displacement. So if you want to find out the change in displacement, तो final speed minus initial speed, दैट इज़ जनरली अ चेंज इन वेलोसिटी. जो उसकी स्पीड थी अभी हाल में उसके बाद बढ़ी या घटी जो भी है, फाइनल स्पीड और इनिशियल स्पीड जो होगा उनका जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड चेंज इन वेलोसिटी. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम एंड चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज v माइनस u अपॉन t. v फॉर द फाइनल वेलोसिटी, u for the initial velocity and t for the time. So if you want to find out the acceleration small a is equal to v minus u upon t. So the change in velocity generally means the difference of velocity of the initial and final. The change in velocity means what?
that is the difference between the final velocity and initial velocity. So therefore the acceleration A is equal to V minus U upon t. That is the standard formula to find out the acceleration. A is equal to V minus U upon t. V is for the final velocity, U for the initial velocity, and t for the time. So change in velocity upon time, that is called as the acceleration. Now when you increase or maybe the find out the acceleration, that generally arises the two type of situation. I'll write here. When you generally implement the acceleration, two situations that may be rise here with the terms of the acceleration. दो तरीके के situations क्या होंगे? पहला situation मैंने दिया है कि final velocity is greater than initial velocity, and second initial क्या है? Final velocity is less than initial velocity. Let me understand the first topic. What is called final velocity is greater than initial velocity. So in this type of case of velocity, it means velocity increase with the, and it should be moving off V minus U upon t is equal to A. So this type of changes is called as a positive acceleration. That is generally simply it is called acceleration. If the final velocity is greater than initial velocity, so that type of the formations of the velocity is called as a positive acceleration, or it is called as a simple acceleration. For example, let I move on to the speed of 30 km per hour. I'll ride my bike on the 30 km per hour. But in a few seconds, I increase my speed. It means I accelerate my vehicle and it is moving from 30 to 60 in a specific time of interval. So 30 is my what? Initial speed in which I'll ride my bike. And when I increase the speed, it moves on to the 60 km per hour. So 60 is what? 60 is my final velocity. So final velocity minus initial velocity, that is generally gives as a acceleration. 60 minus 30 is equal to 30 divided by specific time, that is give as a acceleration. So if this type of occurrence, it means final velocity is greater than initial. Initial is 30 and final is 60. It means that type of value is giving positive acceleration. But into the opposite, if the final velocity is less than initial velocity, then it is called as a reverse form of acceleration, that is called retardation. Example, let I move on to the speed of 50 km per hour. Will I see there is accident on a road, or maybe there some divider is there, or maybe the traffic is there. What you have to do? You just reduce the speed of your vehicle. So let us suppose I am coming from 50 km per hour to 30 km per hour. So I reduce my speed. So final velocity is what? 30 km, and initial is what? 50. So 30 minus 50, that gives the minus answers. So this type of acceleration is called negative acceleration, and that is generally called as a retardation. तो इसको आप क्या कहोगे? Retardation कहोगे. Now clear what is called positive and what is called negative acceleration. Now acceleration is a vector quantity. It generally requires the direction as well as the magnitude. Okay. So acceleration is generally considered as a vector quantity which generally require a specific form of the magnitude as well as the direction. Now if you want to find out the SI unit अगर हमें find out करना है तो change in velocity, that is what? Final velocity minus initial velocity upon time, meter per second square. Acceleration is equal to what? Meter upon second square. That is the general formula. A small unit अगर find करना है तो that is called centimeter per second square. So this is generally about the acceleration. Clear कि what is acceleration, what is called positive acceleration, and what is called negative acceleration. How it can be simple acceleration or how it can be retardation. उसका ऐसा यूनिट क्या है? That is called meter per second square, or it is called centimeter per second square. उसकी quantity vector quantity है क्योंकि we generally require the magnitude as well as the direction. Now next concept I write here कि justify a statement, a body that moving with the uniform velocity having a acceleration 0. How can we explain? So if a body that moving with the uniform acceleration, uniform velocity, so acceleration will be 0. How can you justify this statement? So it is very easy. Acceleration, it means what? Small a. So acceleration small a is what? Is the ratio of the change in velocity of a time. Acceleration is what? Acceleration is a change of velocity of object in a specific time. Then it is called acceleration. If there is a changes into the velocity, speed, it may be increase or it may be decrease with a specific time of interval, then it is considered as a acceleration. So A is equal to V minus U upon t. But in this concept, the concept is given
कि body is moving with the uniform velocity. Now uniform velocity means what? The object that should be cover a equal distance in a equal interval of time, having a speed and time both having a constant, there is no any changes. So uniform velocity से अगर कोई object move कर रहा है तो there is no any changes into their speed like velocity, final और initial velocity में कोई भी changes नहीं होता है. It means v is equal to u. जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वही उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी. जिस स्पीड से वो मूव कर रहा है उसी स्पीड से कंटिन्यूस मूव करेगा क्योंकि उसके अंदर तो कोई चेंजेस ही नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म है इसलिए. सो इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी बोथ विल बी सेम. सो u इक्वल टू v. सो v माइनस यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0. सो 0 इट मीन्स वॉट? अगर यहाँ पे v माइनस यू क्या है आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मेशन है v माइनस यू अपॉन टी. So v minus u, in the case of v and u both are equal, so v minus u is equal to 0. It means it gives the zero acceleration. तो क्या आपको देगा? Zero acceleration देगा. Clear? कि अगर बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इट इज़ कंटिन्यूसली मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट हैविंग नो चेंजेस ऑन टू द वेलोसिटी, इट मीन्स एक्सेलरेशन विल बी जीरो. अगर वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, इट मीन्स द एक्सेलरेशन विल बी जीरो ऑफ अ गिवन बॉडी. नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वी डिस्कसिंग अबाउट द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? उसका एक मैंने एग्जांपल भी दिया है कैसे ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहता है. मीन्स उसका एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट रहना चाहिए हर बार. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के डेफिनेशन समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. सो इफ अ बॉडी दैट ट्रैवल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट वेलोसिटी इंक्रीजेज एट अ स्पेसिफिक इक्वल ऑफ टाइम, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी चेंजेस हो रही है. इफ एक्सेलरेशन मतलब क्या? चेंज इन वेलोसिटी. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या? वेलोसिटी तो चेंज होनी चाहिए पर एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट होना चाहिए. वो कैसे होगा देखिए. See if a body that moving on a straight line and increase its velocity in an equal amount in such interval of time, it is said to be a acceleration is a uniform. If a body that travels on a straight line and increases its velocity, velocity increases its equal amount in which equal amount of time interval, so that kind of the acceleration is called as a uniform acceleration. तो अगर वेलोसिटी के अंदर चेंजेस हो रहा है, अगर वो सेम है एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, तो वो एक्सेलरेशन सेम ही देगा. सो इफ द बॉडी ट्रैवल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन हैविंग इंक्रीज इट्स वेलोसिटी ऑन अ इक्वल अमाउंट इन ईच गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, then this type of acceleration is called as a uniform acceleration. Now see their example. I'll draw one example here there. T that represented time into the second. As for the second, time को किस में मेजर करेंगे? सेकंड के अंदर मेजर करेंगे. v फॉर द वेलोसिटी उसको आप मीटर पर सेकंड में मेजर करेंगे और एक्सेलरेशन को किस में मेजर करेंगे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर मेजर करेंगे. ठीक है. सो कंसिडर अ फिगर हियर. इस फिगर के अंदर अगर आप देखेंगे, सो इट इज़ लाइक अ टावर. इट इज़ लाइक अ टावर और ऊपर एक टॉप ऑफ द टावर है, वहाँ से एक मैं बॉल को रिलीज़ करता हूँ. लेट आई रिलीज अ बॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर. टावर के ऊपर से एक बॉल को रिलीज़ करो. सो द फिगर which shows that in a specific time of interval the acceleration in each cases will be same. How it can be interval? So if you seen that if you observe a specific time of interval like 0 second, 1 second, 2 second, 3 second and 4 second, after 1 second we observe the acceleration. So when I release the ball from the top of a tower, it means initial velocity is 0, time is 0 because it's time we did not release the ball. When I release the ball, in a first second, the velocity will be 9.8. In a second velocity will be 19.6. Third second, 29.4. Fourth second, 39.2. It means what? The definition according to your acceleration, uniform acceleration, the velocity will be increased. Velocity increase हो रही है. पहले 0 मीटर पर सेकंड था, फिर 9.8 मीटर पर सेकंड हुआ, फिर 19.6 मीटर पर सेकंड हुआ, फिर 29.4, 39.2. एवरी सेकेंड अगर देखेंगे तो वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. क्लियर? व्हेन आई रिलीज द बॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, ईच एंड एवरी सेकेंड व्हेन आई सो द वेलोसिटी विल बी चेंज एंड इट शुड बी इंक्रीज. तो हाउ वी कैन बी जज द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म? सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, a is equal to v minus u upon t. A is equal to v minus u upon t. So first acceleration you see that a initial velocity is 0 and first second is what? It becomes 9.8. Starting initial velocity is 0 second. In a first second it will be 9.8 meter per second.
So 9.8 is the final velocity, 0 is the initial velocity. And time is what? 1 minus 0, final 1 second, initial 0 second. So 9.8 minus 0, फाइनल माइनस इनिशियल, वैसे टाइम के लिए 1 माइनस 0 आप करोगे तो क्या मिलेगा 9.8. सेकेंड सिचुएशन में सेकेंड और फर्स्ट सेकेंड के लिए मेजर करते हैं. सेकेंड पे कितना हो गया 19.6, तो फाइनल वेलोसिटी 19.6 हो गई. इनिशियल क्या थी 9.8 फर्स्ट सेकेंड पे, तो 9.6 माइनस 9.8 डिवाइडेड बाय टाइम 2 माइनस 1, उसको भी करोगे तो 9.8 ही मिलेगा. थर्ड सेकेंड पे मूव करो, 29.4 माइनस 19.6 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2, 9.8. So in each and every second you see that there is no any changes into the acceleration, that is 9.8 meter per second square, 9.8 meter per second square. So this type of acceleration is called as a uniform acceleration. क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो तो फ्री फॉलिंग है, उस पर आपने किसी भी तरह का फोर्स नहीं दिया है, फिर भी उसकी स्पीड बढ़ रही है. क्यों बढ़ रही है? क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वैल्यू होती है स्मॉल g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो इसका एक्सेलरेशन क्या मिलेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो इफ अ बॉडी ऑन अ स्ट्रेट पाथ इट इंक्रीज इट्स वेलोसिटी इन अ इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, so that kind of the changes of the acceleration is called as a uniform acceleration. क्लियर? चलिए अभी उसके बाद एक टॉपिक डिस्कशन करते हैं, वो डिस्टेंस अपॉन टाइम ग्राफ. डिस्टेंस अपॉन टाइम का ग्राफ. सो व्हाट डिस्टेंस अपॉन टाइम ग्राफ सेज? द ग्राफ which is plotted on by using the graph which is plotted onto the distance against the distance that is implemented s. डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं आप? s में, और टाइम को किस में मेजर करते हैं? t में. So when the graph is plotted, a distance which is labeled by the s and time which is labeled by the t is known as the distance of time graph. Distance of time graph जो होता है, in which following things that can be implemented or which can be studied through distance upon time graph. When you draw a distance or time graph, the following things which have be easy to study, in which first it helps us to study about the motion of the object. ऑब्जेक्ट का मोशन क्या है वो हमें पता चलेगा. इट में बी बॉडी इज कॉल्ड परफॉर्मिंग अ यूनिफॉर्म मोशन या परफॉर्मिंग अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. डिस्टेंस अपॉन टाइम का ग्राफ अगर आप ड्रॉ करते हैं तो इट जनरली शोज दैट कि इफ अ बॉडी इट मूविंग ऑन टू द यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वो पता चल जाएगा आपको कि आप उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो. इट हेल्प्स ऑल्सो टू फाइंड आउट और एस्टिमेट द पोजिशन ऑफ बॉडी. ऑब्जेक्ट का पोजिशन क्या है वो भी हमें पता चलेगा. एंड इट इज़ ऑल्सो एस्टिमेट द स्पीड द परफॉर्मिंग अ बॉडी. बॉडी कितना स्पीड परफॉर्म कर रहा है वो भी हमें पता चलेगा. तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ग्राफ दैट इज एस ऑफ टी इज जनरली डिनोटेड टू शो अस कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द ग्राफ बाय इट शुड बी यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन. It also suggests what is the actually point of the estimate point of the object from where it should be started and what is the actual speed of body that performing onto that form. So these are the three things which can be easily estimated and studied about by using the distance upon time graph. Now there is a different type of motion and different type of graphs when we can be plotted onto the distance upon time. When you use the distance upon time graph, for example, if object is a stationary, इफ ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी इट कैन नॉट बी मूव, तो अगर उस तरह के ग्राफ को बनाना है तो कैसा बनेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम के लिए. सो इन डिस्टेंस अपॉन टाइम व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन अ फॉर्म ऑफ स्टेशनरी, अगर उसका ग्राफ अगर बताना है तो द लाइन ऑलवेज बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि वो तो स्टेशनरी है, हर पोजीशन पे सेम ही मिलेगा, तो इट शुड बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अगर मोशन के फॉर्म में ऑब्जेक्ट नहीं है, वो स्टेशनरी के फॉर्म में है, तो जो एक्स एक्सिस का पैरेलल ही आपका ग्राफ बनेगा, वो आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम के. अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है इट ऑलवेज बी गिविंग अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि कोई भी डिस्टेंस अपॉन टाइम में कोई चेंज नहीं होगा. और अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के अंदर उसमें अप एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे. सो व्हेन यू हैव टू ड्रॉ डिस्टेंस अपॉन टाइम ग्राफ, अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर यूनिफॉर्म मोशन से स्पीड कर रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन देगा, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का ग्राफ अप एंड डाउन के फॉर्म में इंप्लीमेंटेड होगा. तो दैट इज अबाउट द एक्सेलरेशन. ठीक है, तो दैट आई होप कि फॉर टुडेज सेशंस अबाउट द एक्सेलरेशन यू कैन इजीली अंडरस्टूड एंड स्टडीड. सो आई होप you have to be easily understood and simply I have tried to explain you. So just revise you and try to solve this question in your own words while reading the concept in a textbook. So students, keep revising, keep studying, keep updating your knowledge with using a very useful times.
So once again I requested you, stay home and stay safe. When we meet tomorrow, we'll discussing about the new topics in a form of motion. Students, take care and bye.